It's been over 2 years, viewers, that the Delhi excise policy, the big liquor gate scam that was spoken very much in studios and outside, dominated headlines. At the back of which Arvind Kejriwal lost an election on the corruption taint which stemmed from the liquor gate scam in Delhi. Raids, arrests, courtroom dramas and relentless political fire. Today, the Rouse Avenue Court delivered a stinging setback to the prosecution and the CBI. Arvind Kejriwal, Manish Sisodia and others the case against them has been dismissed. Also, what the court did was bring in the CBI, questioned the investigating officer on why disciplinary action should not be taken against the CBI. केजरीवाल जज नहीं है। कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये साबित हो गया देश के सामने केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। From tears in custody to tears of relief. From being branded the alleged conspirators of a multi-crore liquor scam to walking out of court discharged. A dramatic collapse in one of the most politically explosive cases in recent memory. A special court at Delhi's Rouse Avenue has discharged former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, Manish Sisodia and 20 others, dismantling the CBI's case point by point. And the language is unequivocal. No evidence of manipulation in policy formulation. Serious allegations lack material proof. The claim that Kejriwal was the central conspirator cannot be sustained. He appears to have been implicated largely because he was chief minister and party leader. A warning too that public confidence suffers when prosecutions proceed without solid proof. On Manish Sisodia, the findings are equally blunt. Prosecution case fails judicial scrutiny. No criminal intent established. The overarching conspiracy theory lacks force. Contradictions run through the prosecution narrative. No evidence against him in his capacity as minister. The court did not stop there. It questioned the very architecture of the investigation. A case built on conjecture and speculative constructs. Facts arranged to fit a predetermined conclusion. A narrative resting on fragmented circumstances. A methodology that risks investigative overreach. In effect, the prosecution collapses under its own weight. Outside the court, visible relief, folded hands, teary eyes. Kejriwal calls it vindication and alleges a sustained political witch hunt using central agencies. मैं उनको कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, केवल सत्ता की जो प्रधानमंत्री मोदी जी की और अमित शाह जी की सत्ता की हवस है, ये उसका नतीजा है जो ये षड्यंत्र रचा गया। सारा षड्यंत्र मोदी जी ने चुनाव के लिए तो किया था, अपनी राजनीति को बचाए रखने के लिए और चुनाव जीतने के लिए। आज आप दिल्ली का चुनाव करा लीजिए, आज केजरीवाल 70 में से 70 सीटें लेके आएंगे, क्योंकि केजरीवाल को दिल्ली की जनता एक अलग लेवल पे अपना मानती है। उनका केजरीवाल, दिल्ली की जनता का केजरीवाल आज कोर्ट सर्टिफाइड कट्टर ईमानदार साबित होकर निकला है। The BJP counters sharply, insisting the legal battle is not over yet. सीबीआई उच्च अदालत में जा रही है। हम किसी अदालत पे टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि ये केस उच्च अदालत में जाएगा और दिल्ली को लूटने वाले, दिल्ली को कई तरह से लूटने वाले ऐसे शराब घोटालेबाज अरविंद केजरीवाल को सजा मिलेगी। The Congress has a different tack, attacking Aam Aadmi Party as a convenient ally of the BJP, whose cases cool down at politically opportune moments. Arvind Kejriwal is an ally of convenience for the BJP. Here, in this case, Mr. Arvind Kejriwal is now being prepared. He's been sent back into the washing machine. He's come out spick and span, freshly bathed, because there is election coming in Punjab and Gujarat, where they want to use him against the Congress. Several India bloc allies close ranks. Akhilesh Yadav, Mehbooba Mufti and MK Stalin question what they call selective central agency action.
And that brings us to the larger question. For years, the narrative was thunderous: scam, conspiracy, kingpins. But in a court, volume does not matter. Evidence does. A judge has now said the case could not withstand judicial scrutiny. For Kejriwal, it is a political oxygen. For the CBI, uncomfortable scrutiny. And for Indian democracy, a sobering reminder. State power can prosecute. Only proof can convict. With Shrishti Ojha, Ashutosh Mishra and Aishwarya Paliwal, Bureau Report, India Today. All right, news break coming in. The Delhi Chief Minister Rekha Gupta has reacted. Mind you, in the press conference, Arvind Kejriwal had said, hold elections today, I challenge you. The BJP will not win more than 10 seats. At the back of it, you have the Delhi Chief Minister, Ms. Rekha Gupta, coming out suggesting the tears of Arvind Kejriwal right outside the Rouse Avenue court were crocodile tears. That he manipulated a lot of evidence. Why did they roll back the liquor policy? Invoking the Beiman Kejriwal attack, Chief Minister Gupta listed out allegations and the alleged scams under the Aam Aadmi Party rule. Listen in. देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये अभी लोअर कोर्ट का डिसीजन या उनकी सेइंग्स हो सकती है और हम सब जानते हैं कि जब ये सारा मामला उठा था तो किस तरीके से सबूतों के साथ उन्होंने छेड़छाड़ करी। 150 मोबाइल जो है उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की, सारा उसका डाटा उड़ा दिया गया। अगर वो सही थे, आज जितने घड़ियाली आंसू वो दिखा रहे हैं, ईमानदारी की, कट्टर ईमानदारी की बातें कर रहे हैं, तो मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अगर वो सही थे तो क्यों जैसे ही जांच शुरू हुई तो उन्होंने अपनी ये लीकर पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया, तुरंत वापस किया? अगर वो सही थे तो ऐसा क्यों किया? अगर वो ये कह सकते हैं कि एक के साथ एक दारू की बोतल देना दिल्ली के लिए सही था क्या वो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे सेक्टर को प्राइवेटाइज करने की दिशा में काम किया और जो आपका ट्रेडर था उसको आपने, उसका जो कमीशन था 5% से उसको 12% कर दिया, उसका मुनाफा बढ़ाया, उस मुनाफे में आपकी शेयरिंग ऐसा पूरी तरीके से दिखाई देती थी, क्या वो गलत है? All of this, viewers, comes at a time where many had already written political obituaries where Arvind Kejriwal was concerned, leave alone the national capital, that the Aam Aadmi Party would not be able to hold on to Punjab. So for the party, for the top leadership, what happened today in the Rouse Avenue court is an unexpected shot in the arm. I can tell you because I was talking to sources within the Aam Aadmi Party. This morning, the top leadership was only formulating what would be the defense of the Aam Aadmi Party if charges are framed and the case goes to trial. Because the Aam Aadmi Party thought very clearly that at least the case will go to trial and as per procedure, charges will be framed. Now, what happens in the case once the case is heard over time remains to be seen. I can tell you for sure, when I spoke to my sources within the Aam Aadmi Party, the top leadership was stunned when the verdict came in from the Rouse Avenue court. Let me break it down because there are two aspects of it, and I have with me two ace editors and reporters who are going to break it down for us, one who was at the Rouse Avenue court and the other, viewers, because this is an indictment of the CBI as well, because the court today, the Rouse Avenue court today, also said that there needs to be a probe against the investigating CBI officer, that the entire case was premeditated and choreographed. So what does it really mean? Because the Enforcement Directorate case also rests on the CBI case. I want to bring in my colleague Munish Pandey and Shrishti Ojha. Munish, I'm going to cut across to Shrishti first because all the action unfolded this morning at the Rouse Avenue court. And Shrishti, to bring you in, break it down for us on what happened in court today, which clearly has led to a seismic shift in Delhi politics and also the image of Arvind Kejriwal, because for him, this was his moment of reckoning. He has come out and said everything, all the charges against me, my time in jail, my 5 ministers in jail, me being forced to step down as a sitting chief minister, being thrown in jail, Atishi coming in, my party disintegrating, all was choreographed, and so I could lose the Delhi election.
Well, Preeti, firstly, on lines of what you just said, I would like to point out that somebody who covers courts on a daily basis, I would like to say that for the order that has come in from Delhi's Rouse Avenue court today was not unexpected, because we see this happen on a daily basis where there's a certain perception that we see being framed around certain allegations and cases, but what the court ends up pronouncing is completely different, because the court's order is not based on the political perception or the perception between perception in the public in general. It's based on the evidence and the material before them. At times the prosecution just doesn't have the evidence to prove the serious allegations that they have made. Again, as somebody who has covered the Delhi excise policy case since the beginning, starting from Aam Aadmi Party leader Manish Sisodia's arrest, and we also what happened post that, with multiple leaders being put behind the bars, spending months, even Manish Sisodia spending over a year behind the bars. One thing that we can say very, very clearly is that it is definitely a day for the Aam Aadmi Party and its leaders to celebrate. And I say that because we have seen them face orders which were not favourable for them. Today we have a court of law very clearly stating that the Delhi excise policy scam, as the CBI and ED have been calling it since 2021, was maybe not a scam at all. The word scam has been associated with Aam Aadmi Party's Delhi excise policy 2021 to 22 since 2021, but the court today said that there's absolutely no evidence that has been placed before the court to even say that the excise policy was in any way manipulated, altered, changed to benefit any individual or to benefit the South lobby, as has been claimed by the investigating agencies. It's huge. Shrishti, I want to go to two things I want to quickly ask you to summarize for us before I go to Manish. Number one, with what you say, what happened is quite unprecedented, in the kind of manner in which the judgment was given. But number one, Shrishti, has it ever happened where the courts have practically indicted a central agency, where they said that action needs to be taken against and a probe needs to be mounted against the CBI officer because this seemed to be a premeditated, choreographed event to corner a political party? Number one. And number two, Shrishti, encapsulate for us, because many are looking at it, the case has been dismissed. But in regular legal parlance, isn't a dismissal of case even bigger than an acquittal of a case? I will answer your second question first, Preeti. Definitely a discharge at this case is definitely big, because the court very clearly didn't even think it to be a fit case to proceed further with the trial. When we talk about a case of conviction or acquittal, that happens after the case has been through trial. The court sees at least there is prima facie on the face of it some evidence to put the accused through trial. In this particular case, the court has very clearly said that the CBI hasn't even been able to put forth evidence before court to even put the accused in this case, being Manish Sisodia, Arvind Kejriwal and several others. They should not be put through a trial also. It's very rare that we see discharges happening at the stage at a pre-trial stage itself. In this case, trial hadn't even started. The court did not even think it a fit case to frame charges against the accused. That is how less the evidence that was produced by the prosecution agency in this case. As far as if we discuss the fact that this doesn't happen very rarely, that the court questions the investigating officers, of course we see from lower courts to the top court, the Supreme Court, they often question the investigation in cases, the investigating officers in these cases, but the remarks that have come in from Delhi's Rouse Avenue court today definitely are concerning. We do not see this happen very often, to order a departmental inquiry against the CBI's investigating officer in a case of this nature. Because let's admit it, Preeti, this wasn't an ordinary case. We were talking about a case where the accused were not just political leaders. We're talking about a sitting chief minister, a sitting deputy CM being arrested, being put behind bars. So of course the seriousness of the case increased, not because politics is involved, because sitting officers who were holding public offices were involved, and that's exactly what the court said today, Preeti, that public confidence in agencies would be
eroded if prosecution would make serious allegations against those holding Right. public offices but won't be able to produce material to support their allegations. True. Back to Well, you. even earlier, one can remember when, you had Justice Sanjeev Khanna who had gone and said and warned the CBI then that your case will not even stand trial. I just want to go back to that statement that was made, and today it's all come full circle with the Rouse Avenue court discharging the case, dismissing the case, not even saying that it's worth a trial. I want to bring in my colleague Munish Pandey into this conversation. Munish, what implications could it really have, because the Enforcement Directorate's case is mounted on this very case? Well, Preeti, there is no doubt that it's a major setback for the Central Bureau of Investigation. It is not only about discharging the 23 accused, a case which was being built by the Central Bureau of Investigation and the Enforcement Directorate parallelly from last 5 years. The case has been demolished by the lower court. But the observations made by the lower court against the Central Bureau of Investigation, their investigation and their officers, the allegations are very grave in nature. The court has gone on to an extent of saying that CBI was trying to set narrative in this case. While hearing the case, in case of Deputy Excise Commissioner, then Deputy Excise Commissioner Kuldeep Singh, the court said that I don't know why you have been made accused in the case. There is no evidence against you. Same was in the case of Arvind Kejriwal and Manish Sisodia. So now there are two things. The entire ED case is dependent on the Central Bureau of Investigation's case. The Enforcement Directorate started their money laundering investigation based on the CBI FIR. CBI filed a charge sheet. Parallelly, the Enforcement Directorate filed a charge sheet. In both the cases, the evidence, the material evidence, the accused, almost everything is same. So if the CBI case falls flat, it will have implications on the Enforcement Directorate case also. So there are two things. One is a face-saving exercise for the Central Bureau of Investigation because the observations are grave in nature, and that is why CBI has been maintaining that they are still confident that they have given enough evidence before the court. The court has not appreciated the evidence given by the Central Bureau of Investigation, and most of the evidence have been ignored, and that is why they have already approached the High Court in this case. And second, there will be pressure from the Enforcement Directorate also that this case, the lower court order should be stayed by the High Court so that the Enforcement Directorate can at least proceed with their trial in this case. But it is going to be very challenging, Preeti, because in most of the cases, what we have seen, if there is a legal hurdle, if there is a observation by the lower court, it becomes extremely difficult for any prosecuting agency to come out of it and, file a fresh charge sheet or, change the narrative of the case. But Munish, I want to ask you very quickly because because there is a political line in this as well. Many today, till date, keep recalling the caged parrot jibe at the CBI. Today is a day of reckoning for our central agencies as well, especially the CBI is concerned, where the top court today has practically said that there needs to be a departmental inquiry against the investigating officer of the CBI because it seems that the entire case was choreographed. Absolutely, Preeti. And, time and again, there have been observations not only by the top court, but also by the lower court. And in most of the high-profile cases, what we have seen that CBI cases fall flat. Remember 2G case, the entire political scenario was made that it's the biggest scam of the country. But when the order came from the lower court, the entire case, was demolished by the court. Same way in this case also, what I have been saying with the full authority here is that, Preeti, it is going to be a face-saving exercise for the Central Bureau of Investigation because the remarks made by the lower court in this case against the Central Bureau of Investigation, their own officer, it is grave in nature. CBI, of course, will approach the High Court. It has already approached the High Court. We are hearing that there is a high possibility that the hearing will take place tomorrow, and then only CBI will ensure that there has to be a departmental inquiry or not. But there will be a legal battle by the CBI to make sure that the order of lower court is either stayed or reversed so that there is some face-saving exercise for the Central Bureau of Investigation and also for the Enforcement Directorate in future.
Well, I appreciate both of you for joining us. Like I said, viewers, today, at least where central agencies are concerned, it is a day of reckoning for the CBI and central agencies, because what the Rouse Avenue Court has said today is damning and damaging for what is the perception of investigative agencies in the country. I want to quickly cut across right now and listen in to the former Deputy Chief Minister, Manish Sisodia, who stayed in jail for over a year and a half. His passport was taken, his wife was ailing, she's suffering from a serious illness. I spoke both to Manish Sisodia and his wife. For him, he says it's come full circle because, strangely, a bit of serendipity, I would reckon, that 3 years ago, on the same date, 27th January, he was arrested. मनीष जी, सीमा जी, बहुत बड़ा दिन है आज। कितना बड़ा दिन, कितना बड़ा दिन मानते हैं मनीष जी? How big a day is this? बहुत बड़ा दिन है। हम लोगों ने अपने आप को, हमने, हमारे परिवार ने इस बात के लिए झोंका हुआ था, अपनी इच्छा से झोंका हुआ था, लेकिन झोंका हुआ था कि हमें इस देश में ईमानदारी की राजनीति करनी है, हमें इस देश में शिक्षा पे काम करना है, और उस पर सवाल खड़े करते हुए हमें भ्रष्टाचारी कहा गया। मैंने व्यक्तिगत रूप से ये दंश झेला, मेरी पत्नी ने झेला, मेरे बेटे ने झेला, हमारी पार्टी के लोगों ने झेला कि आप लोग भ्रष्टाचारी हो। आज अच्छा लग रहा है कि मोदी जी ने ईडी और सीबीआई की कलम से हमें भ्रष्टाचारी सिद्ध करने की कहानी लिखी थी। आज ऑनरेबल कोर्ट की कलम से वो सच साबित हो गई कि सच्चाई सामने आ गई कि मोदी जी की कहानी झूठी थी। सच ये है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इनका परिवार ईमानदार है। मनीष जी, दे से इन इंग्लिश इट्स कम फुल सर्कल। एक प्रोफेशनल है जो आप पार्टी तक है और एक पर्सनल है। आपके लिए इट्स अ विक्ट्री ऑन बोथ फ्रंट्स टुडे। आप जैसे बता रहे थे, बिकॉज ही वाज टेलिंग मी राइट बिफोर के एग्जैक्टली 3 years अगो ऑन 26 फरवरी। ये भी बहुत यू आर राइट कि इट्स लाइक ए सर्कल। 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने मुझको अरेस्ट किया था और 27 फरवरी 2023 को उसी कोर्ट में वहीं खड़ा किया था ले जाके, और आज 27 फरवरी 2026 को उसी कोर्ट ने उसी जगह पे खड़े होकर जहां मैं उस दिन खड़ा हुआ था कहा कि ये पूरी कहानी मुकदमा चलाने लायक भी नहीं है, तो ट्रायल चलाने लायक भी कहानी नहीं है। तो इमोशनल भी था, अच्छा भी लग रहा था। मतलब अगर नेचुरल जस्टिस है तो यही है। नेचुरल जस्टिस यही है क्योंकि मोदी जी जैसा आदमी अपने आप को भगवान समझने लगे तो फिर एक मैसेज आता है कहीं से कि भगवान कुछ और ही है। मोदी जी भगवान नहीं है, अमित शाह भगवान नहीं है। इस देश की सत्ता में कोई ईडी सीबीआई के दम पे जाके बैठ जाए, इलेक्शन कमीशन के दम पे जाके बैठ जाए और वो खुद को भगवान समझने लगे, वो भगवान नहीं है। भगवान भगवान है। मनीष जी, इसमें पर क्योंकि अब हाई कोर्ट में जाएंगे, CBI is going to the high court as well, पर एक दूसरा सवाल मनीष जी, क्योंकि आप आज उसी कोर्ट में थे और पहली बार CBI से डायरेक्टली क्वेश्चन किया गया है उसको भी, मतलब अगर आप इंडाइटमेंट बोल दें कि आप जो आयोग के खिलाफ जो बोला गया है आज, पहले नहीं बोला गया था। आप खड़े हुए थे, आप भी वही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे जो पिछले 3 साल जिन्होंने। लगता है कि ऑफिसर्स को भी समझना चाहिए कि देश उनका भी है। हर एक एजेंसी के ऑफिसर को, चाहे वो सीबीआई में बैठा है, ईडी में बैठा है, अल्टीमेटली उसको भी समझना चाहिए कि जिस तरह मोदी जी के इशारे पर, अमित शाह जी के इशारे पर वो कुचक्र रचते हैं, अल्टीमेटली उसकी आंच में किसी दिन वो भी जलेंगे। और आज एक ऑफिसर को जलना पड़ा इसमें, उसकी आंच उन तक पहुंची। मैं किसी की बर्बादी की कामना नहीं करता, लेकिन शायद देश भर के उन ऑफिसर्स के लिए जो मोदी जी जैसे लोगों के कहने पर ईमानदार लोगों के खिलाफ झूठी कहानियां लिखते हैं, उनको भी तो सबक मिलेगा इससे कि ये तो गलत है। अल्टीमेटली देयर आर कोर्ट्स इन दिस कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन है, भगवान है। कोई एक्सचेंज रहा जब आपने देखा तो होगा, क्योंकि ऑफिसर्स तो वही हैं और पिछले 3 साल वही क्वेश्चन कर रहे थे आपसे। मतलब मुझे तो याद वहाँ कोर्ट में खड़े हुए यही आ रहा था। पहले उनसे हाय हेलो हुई थी जब पहुँचे थे, तो लेकिन जब जजमेंट सुनाया जा रहा था या उसके बाद में, मतलब माई हार्ट वॉज फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड टू एग्जिस्टेंस, नेचर, गॉड और अपने सारे जज ऑफ कोर्स, और अपने सारे जिन लोगों ने कष्ट के समय में साथ दिया, जिन लोगों ने भरोसा किया कि नहीं यार हम जानते हैं तुम बेईमान नहीं हो,
क्योंकि आप ईमानदारी की राजनीति कर रहे हो, चारों तरफ से अगर आपको घेरा जाए कि आप तो बेईमान निकल गए, उस वक्त आपके सामने खड़े हों कुछ लोग और कहें कि हम जानते हैं ना तुम ईमानदार हो, तो उन सब लोगों का मैंने बहुत अपने दिल से धन्यवाद किया। तो उस वक्त उसके बाद फिर उनसे ज़्यादा हाई हेलो नहीं हुई। पर मनीष जी, जो आप कह रहे हैं, एक जो ट्रूथ है, जो आपकी ट्रूथ है वो आपकी ट्रूथ है, पर एक परसेप्शन होता है। दिल्ली चुनाव के पहले जो पूरा माहौल बना कि आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है, करप्ट है, लिकर स्कैम को देखिए, आपको लगता है बहुत टू द डिग्री the reason why you lost the election, the आम आदमी पार्टी lost the election was because of this? सारा षड्यंत्र मोदी जी ने चुनाव के लिए तो किया था, अपनी राजनीति को बचाए रखने के लिए और चुनाव जीतने के लिए। आज आप दिल्ली का चुनाव करा लीजिए, आज केजरीवाल 70 में से 70 सीटें लेके आएंगे। कारण एक तो ये कि एक साल के अंदर अंदर जनता त्रस्त हो गई है, और दूसरे आज दिल्ली की जनता, क्योंकि केजरीवाल को दिल्ली की जनता एक अलग लेवल पे अपना मानती है, उनका केजरीवाल, दिल्ली की जनता का केजरीवाल आज कोर्ट सर्टिफाइड कट्टर ईमानदार साबित होकर निकला है। ये बात आज दिल्ली के एक एक आदमी को लग रहा होगा कि आज अगर चुनाव कराने ना, इस आदमी को 70 सीटें देंगे। एक एस्पेक्ट प्रोफेशनल है, एक एस्पेक्ट पर्सनल भी है मनीष जी। Your wife has fought a long battle alongside you. Your son is in Canada. And all the charges that were swirling. आपने इतना टाइम जेल में स्पेंड किया। पर्सनली कैसे देखते हैं? पर्सनली मुश्किल होता है, मतलब ऑफ कोर्स आप जब लड़ाई लड़ने चलते हैं तो आप हर तरह के अंजाम के लिए मन बना के चलते हैं। और राजनीति में जब आप ईमानदारी की राजनीति करोगे, करप्ट लोगों को हटाने की राजनीति करोगे, तो वो बाउंस बैक करेंगे। पर इतना नहीं सोचा था कि इस तरह से करेंगे कि फैमिली, बच्चा, इन सबको भी सफ़र करना पड़ेगा। मेरी वाइफ ने काफ़ी सफ़र किया, मेरे बेटे ने। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी? तबीयत ठीक नहीं थी। उस दौरान बहुत इमोशनल मोमेंट होते थे हमारे लिए कि अलग रहना, अकेले रहना, बेटा अलग, माँ अलग, मैं अलग। और मतलब मोदी इतनी बार न्यूज़ आती थी। मैं कहूँगा कि मोदी जी को आज सोचना तो चाहिए कि इस परिवार को आपने इतना प्रताड़ित किया एक झूठे केस में, आज तो सोचना चाहिए उनको। क्योंकि तब न्यूज़ आती थी मनीष जी कि आप क्योंकि ये हॉस्पिटल में थी, फिर घर पे तबीयत ठीक नहीं है, आप आके मिलते थे, लगता था कि इस रात की सुबह है कि नहीं है। परेशानी तो होती थी, अब इतना तो नहीं सोचा, रात की सुबह तो नहीं सोचा, लेकिन परेशानी तो बहुत हुई। हाँ। परेशानी तो होती है, हम सब लोग देखो आम इंसान हैं, दर्द तो हमें भी होता है, दुख तो हमें भी होता है, इमोशंस तो हमारे भी हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि राजनीति में अगर हम बड़ी लड़ाई लड़ने चलें तो हमारे दर्द नहीं होगा, दुख नहीं होगा। दुख होता है, मेरा बेटा अगर अकेला बैठ के अपने हॉस्टल के किसी कमरे में रो रहा है, दुख तो मुझे भी होगा। आप मिलने नहीं जा सके क्योंकि पासपोर्ट नहीं है? हाँ, अनफॉर्चुनेट है कि वो जब से गया मैं मिलने कनाडा गया, बट आई होप कि मैं अब जा पाऊँगा। अभी जाएंगे? लड़के से बात हुई है? हाँ, मेरी बात हुई। He is also ecstatic. Of course, one of the most happiest person. Most happiest person. Relieved? Relief है? हाँ, नहीं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। It's a new beginning, you think? It's a new beginning. देखिए, अभी भी काम तो वही अभी और नहीं, अभी डिस्चार्ज हुआ है, हाई कोर्ट में भी केस जाएगा, you don't know। मैं देखिए इस केस की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल भी काम तो हमें वही करना है। हमें अपने देश से प्यार है और हमें लगता है कि इस देश में ईमानदारी की राजनीति और शिक्षा की राजनीति के लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। आगे भी कोई बाधा आएगी उसको भी झेलेंगे और मजबूत होंगे। मनीष जी, वन फाइनल क्वेश्चन आई विल आस्क यू, क्योंकि इसने फिर जो आज वर्डिक्ट आया है ऑपोजिशन को यूनाइट कर दिया है, पर कांग्रेस आपके साथ नहीं है। कांग्रेस फिर कह रही है कि देखिए ये तो बी टीम है। ये देखिए ना, आम आदमी पार्टी महत्वपूर्ण है, ना बीजेपी ना कांग्रेस। देश महत्वपूर्ण है। मैं तो जो लोग ये सब कह रहे हैं मैं उनको कहूँगा, इस देश को स्कूल चाहिए, इस देश को अस्पताल चाहिए, रोज़गार चाहिए, इस देश को व्यापारियों का व्यापार चाहिए ताकि देश तरक्की कर सके। आप उस पर सोचिए, कांग्रेस क्या होगी, अपोजिशन क्या होगा, सत्ता क्या होगी। देश को आगे रखिए, बाकी सब चीज़ें पीछे छूट जाएंगी। बीता हुआ टाइम तो नहीं लौट के आ पाता क्योंकि जो आपने जेल में बिताया, पर आई विश यू लक गोइंग अहेड। होली तो बढ़िया जाएगी। होली बहुत अच्छी आएगी, आप भी आइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आतिशी, अ बिग डे टुडे, बड़ा दिन। बिल्कुल, आज जो सीबीआई कोर्ट का ऑर्डर आया है वो एक बात दिखा देता है कि सच्चाई का रास्ता कितना भी मुश्किल हो, उसमें कितना भी संघर्ष हो, लेकिन जीत आखिरकार सच्चाई की होती है।
डिड यू एक्सपेक्टेड, क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि आज, क्योंकि लग रहा था कि चार्जेस फ्रेम होंगे, ट्रायल पर जाएगा, उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है, पर एक्सपेक्ट किया था कि आज जो होगा जैसे हुआ? देखिए, हम तो पिछले 4 साल से, जब से ये झूठे आरोप लगे हैं, जब से अरविंद केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे कीचड़ फेंका जा रहा है, बार बार हमने एक ही बात कही है कि ना आम आदमी पार्टी ने 1 रुपये का भ्रष्टाचार कभी किया है, ना 1 रुपये का भ्रष्टाचार कभी करेंगे। लेकिन आज इस कोर्ट के आदेश ने इस सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने रख दिया। पिछले 4 सालों में बीजेपी ने कितनी कोशिश करी झूठे आरोप लगाने की, झूठे केसेस करने की, कीचड़ उछालने की, केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचारी कहने की, लेकिन आज के कोर्ट ऑर्डर ने 2 चीज़ें पूरी दुनिया को दिखा दी। एक तरफ बीजेपी का षड्यंत्र और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ईमानदारी और उनकी सच्चाई। जो ऑर्डर है उसमें इंडाइटमेंट है डायरेक्टली ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, सीबीआई की इंडाइटमेंट है डायरेक्टली, उसको कितना बड़ा मानती हैं? क्योंकि इसी पर ईडी का केस है, तो ये अब सब, क्योंकि डिस्चार्ज इसमें हो चुका है, लोअर कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट से डिस्चार्ज हो चुका है, इसको कैसे देखते हैं? आपको याद होगा कि जब अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली थी, तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि उनका अरेस्ट सीबीआई ने एक दुर्भावना से किया था और केंद्र सरकार की एजेंसीज एक तोते की तरह हो गई हैं, एक पिंजरे में बंद तोते की तरह हो गई हैं जो सिर्फ अपनी आकाओं की बात सुनते हैं। आज फिर से उसी तरह से सीबीआई पर उससे भी बड़े सवाल उठे हैं। जिस तरह से कोर्ट ने 600 पेज के ऑर्डर में हर पेज पर सीबीआई को फटकार लगाई है, कोर्ट में खड़े होकर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जज साहब डांट रहे हैं, जज साहब उनकी ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हैं। जज साहब ने अपने ऑर्डर में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पर डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए कहा है। मेरी मेमोरी में तो कोई ऐसा केस नहीं आ रहा जहां पर सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स पर एक्शन लेने के लिए कहा है कोर्ट ने। तो ये बिल्कुल साफ है कि पिछले 4 साल से अपनी सत्ता की हवस में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर केस किए। अगर आज कोर्ट में 600 पन्ने में एक जज बार बार बोल रहे हैं कि किसी भी आरोपी के खिलाफ सबूत है ही नहीं, तो क्यों अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा? क्यों मनीष सिसोदिया ने 2 साल जेल में बिताए? क्यों संजय सिंह जेल गए? और जो कीमत हमारे नेताओं ने और जो उनके परिवारों ने अपने दुख से, अपनी पीड़ा से, जो अत्याचार उन पे हुआ है, उसका खामियाजा कौन भरेगा? मनीष सिसोदिया जी की पत्नी जब वो 1.5 साल जेल में रहे, उनको इतनी सीरियस बीमारी है और उनकी तबीयत ख़राब होती गई, हमारी आंखों के सामने ख़राब होती गई। वो उस 1.5 साल में कम से कम 5 बार अस्पताल में एडमिट हुई। मनीष जी जेल में होते थे, वो अस्पताल में उनको देखने भी नहीं आ पाते थे। उस समय की कीमत कौन चुकाएगा? संजय सिंह के बुजुर्ग माता पिता के सामने उनके बेटे को उठा के जेल में लेके गए थे, उसकी कीमत, उनके आंसुओं की कीमत कौन चुकाएगा? अरविंद केजरीवाल जी की माँ हॉस्पिटल से आई थी उस दिन, जिस दिन ईडी या सीबीआई उनको अरेस्ट करके लेके गई थी। उस माँ के आंसुओं की कीमत कौन चुकाएगा? सबने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी जब 6 महीने जेल में थी, उनकी तबीयत का क्या हाल हुआ था। सबने देखा कि किस तरह से उनको जेल में इंसुलिन तक नहीं दी गई थी, उस आदमी को जो 30 साल से, जिसको शुगर की समस्या है। आप सोचिए उसके शरीर को क्या हुआ होगा 6 महीने में। ऐसी सत्ता की हवस जो भारतीय जनता पार्टी में है कि किसी भी प्रतिद्वंदी को हर कीमत पर ख़त्म कर डालो, ये ठीक नहीं। और मैं सल्यूट करती हूँ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे नेताओं को, उनकी हिम्मत के लिए। वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते थे, वो दब सकते थे, वो झुक सकते थे। इस देश में विपक्ष के इतने नेता हैं जो एक केस होने पर जेल के नाम पर कूदकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए, लेकिन ये लोग दबे नहीं, ये झुके नहीं, इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने सारा अत्याचार झेला क्योंकि उनके पास उनकी सच्चाई की ताकत थी।
You were the front for the party. You were the chief minister then. Your entire top brass was arrested. आप तब चीफ मिनिस्टर थी, पूरा टॉप ब्रास अरेस्ट हो चुका था. आप और सौरभ ने मोर्चा संभाला था उस वक्त. क्या आपको लगता है, do you think somewhere down the line that possibly the reason for your loss could also be attributed to the perceptional loss, जो धीरे धीरे आपकी जो छवि थी, क्योंकि आप एक एंटी करप्शन पार्टी थे, you are considered to be different. तो वो perceptional loss you had to pay through the loss electorally in Delhi. मैं तो बीजेपी से कहूँगी, अब करवा के दिखाएं वो चुनाव. झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, अपनी एक एक एजेंसी को इस्तेमाल करके झूठ जो बोलते थे कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया. आज करा के दिखाएं दिल्ली में चुनाव. उनकी 1 साल की सरकार चली है और आज ये फैसला आने के बाद करवा के दिखाएं. So you're saying you actually paid the price, कि आपने वो प्राइस पे किया of perceptional loss, जो बार बार बोलने का. जब बीजेपी बार बार उनकी एजेंसीज आकर बोलती थी कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, जब बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, अब एक आम इंसान को पीएमएलए की टेक्निकलिटी नहीं पता. उनको नहीं पता कि जब ईडी गिरफ्तार करती है तो उस कानून में बेल मिलना लगभग असंभव है, और जब तक ईडी तैयार नहीं होती है तब तक बेल नहीं मिल सकती है. तो उस आम इंसान की दृष्टि से सोचिए, जब वो रोज सोचता था जी अब ट्रायल कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी, अब हाई कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी, अब सुप्रीम कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी, तो एक सवाल तो उठता होगा मन में कि शायद कुछ किया ही हो. लेकिन आज जो कोर्ट का ऑर्डर आया है उससे मुझे तो ये भरोसा हो गया कि देखिए, भगवान के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं है. और आज इस कोर्ट के ऑर्डर ने 2 चीज़ें पूरे देश के सामने रखती हैं. एक, बीजेपी का षड्यंत्र, और दूसरा अरविंद केजरीवाल की हिम्मत और अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी. आतिशी, फाइनल क्वेश्चन, लास्ट सवाल, क्योंकि एक ये सारा जो ऑपोजिशन था वो कहता था द ऑपोजिशन हैड कम टुगेदर ऑन द प्लैंक दैट देयर हैज बीन अ मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज एंड इट्स अ विच हंट बाय सेंट्रल एजेंसीज. आज कांग्रेस आपके साथ क्यों नहीं खड़ी है, क्योंकि वो आपको अभी भी टीम बी कह रही है? देखिए, वो तो सवाल, उसका जवाब वो ही देंगे कि वो आज क्यों नहीं साथ खड़े हैं. क्योंकि पूरा देश तो देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि 600 पन्ने में एक जज ने बता दिया कि 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का सबूत नहीं है. और झूठे केस में किस तरह अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, पूरी आम आदमी पार्टी को परेशान किया गया, आज ये पूरा देश देख रहा है. और आज ये पूरा देश देख रहा है कि अरविंद केजरीवाल की हिम्मत थी, उनकी ईमानदारी थी, जिसकी वजह से वो दबे नहीं. क्या मैसेज लेके जाएंगे आप? बिकॉज एज अ पार्टी यू हैव टू गो बैक टू द पीपल टू टेल देम दैट दिस केस हैज़ बिन डिस्चार्ज, ये केस डिस्चार्ज हो चुका है, और स्पेशली कोर्ट की तरफ से तो इंडाइटमेंट ही आया है, सीबीआई के ऊपर सवाल उठे हैं. तो क्या अब आप लोग बोल रहे हो कि जैसे आपने बोला कि अगर हिम्मत है तो आज की डेट में चुनाव करके दिखाओ, तो क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, मैं तो बीजेपी वालों को कहूँगी, मोदी जी को भी कहूँगी, देश में बहुत समस्याएं हैं, दिल्ली में भी बहुत समस्याएं हैं. दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, दिल्ली में पानी के, पीने के पानी की इतनी समस्या है, लोगों के घरों में सीवर का पानी आ रहा है नलके से. हमने देखा है कि किस तरह के देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों की मौत हो गई है सीवर के पानी की वजह से. आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों का बुरा हाल हो गया है, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, डॉक्टर नहीं हैं. तो मैं तो बीजेपी वालों से यही आग्रह करूँगी कि षड्यंत्र रचना छोड़िए, जनता के बारे में सोचिए, जनता के लिए काम करिए. और अगर जनता से नहीं डरते, न्यायपालिका से नहीं डरते, कम से कम भगवान से तो डरें. It's going to be a good Holi for you? Yes, definitely. Have a good one. Thank you. All right, I want to cut across right now to Mr. Pradeep Bhandari. He's a Bharatiya Janata Party spokesperson. He was very, very active, very, very vocal, especially during the times of Delhi elections, where, Pradeep, welcome to the show. The entire campaign of the BJP during elections was built on the tarnished image and corrupt image of Arvind Kejriwal. What has happened today is exemplary because on one end, the judge has said he doesn't even think this case had the merit to go to trial. It is the day of reckoning, not just, Pradeep, for investigating agencies like CBI, which have been indicted in what the verdict was today from the Rouse Avenue court, but also your party, because you built an entire campaign
on the rhetoric of Bhrashtachar and Aam Aadmi Party? Well, Preeti, on May 9, 2017, the Honorable Supreme Court revived the order of the lower court which quashed the fodder scam trial against Lalu Prasad Yadav. Before 2017, it was Tejasvi Yadav and the RJD which claimed that Lalu Prasad Yadav was honest in and did not commit any act of corruption in the fodder scam. You had the Honorable Supreme Court intervening and completely changing it. In the Jessica Lal case, if you recall, even the lower court had passed that there should be no case, and you had the higher judiciary intervening. This is not for the first time. And if you recall, even in the case of K. Ponmudi disproportionate asset case, it was the lower court which said that the Tamil Nadu education minister was innocent. He had not committed any act of corruption. The trial court in 2016 acquitted it. Madras High Court in December 2023 framed the charges, overturned it, and he was sentenced to 3 years of imprisonment. In the court of public opinion, when Mr. Kejriwal went saying that he's honest, even in Haryana, which you covered very minutely, and in Delhi, both of them, Arvind Kejriwal in one got lesser votes than Nota, and in Delhi he was ousted out of power despite being in power for 15 years. So whether it is court of public opinion or the court of legal opinion where he was rejected bail multiple times, the courts have been very clear. On this particular case, I believe the CBI has already filed an intervention appeal in the High Court, and we should wait for the judgment of the High Court or the order of the High Court. This is just the lower court making an opinion and a judgment. But Pradeep, that's the premise of this judgment and verdict today, with the case being discharged, not even fit for trial as per the Rouse Avenue Court. That would mean that the premise in the People's Court was vitiated on propaganda, which seemed to suggest that this party and the leadership was corrupt. And now the court was saying that there was no corruption. It was orchestrated. It was choreographed against them. And you're quoting that, yes, the CBI has gone to the High Court, and you're quoting various examples where lower court verdicts have been overturned by high courts. Now, you can't have it both ways, because Pradeep, when Arvind Kejriwal was given bail by the Supreme Court at that time, the BJP spokespersons and the BJP had quoted what the Rouse Avenue Court said. Today, the Rouse Avenue Court has come out and said all of this was choreographed. Well, I believe that as we speak, already the CBI as an investigative agency has filed an appeal in the High Court. So if tomorrow, hypothetically, the High Court stays the order of the lower court, I believe that we will be back to square zero. On the part of we quoting the Rouse Avenue, we quoted the Rouse Avenue Court when the Rouse Avenue Court's opinion was complemented by the Honorable Delhi High Court. And if you recall, whether it is on 5th June 2024 or the 25th June 2024, or even when the matter has went to the Supreme Court, there has been repeated rejection of bail plea and observations which said that prima facie it's an act of corruption. So I would say that I would rather believe in the Honorable High Court and the higher judiciary than just relying on the judgment of a single judge of a Rouse Avenue Court when that particular judgment has already been challenged in the High Court. Well, Pradeep, thank you for taking the time out and joining us, because ultimately, you're saying you'd believe what the Rouse Avenue Court, the High Court will say, but at time you've quoted the Rouse Avenue Court. Well, right now, the case might have been approached where the CBI is concerned, where the High Court comes into question. But right now, legally, where Arvind Kejriwal and many members of his political party, including Manish Sisodia, are concerned, the case against them was discharged. It did not even have the merit to stand trial, as per the Rouse Avenue Court, making it very clear that there was not a shred of evidence, and also indicting the investigating officer of the CBI, suggesting that there be a probe, a departmental probe against him, as this entire probe was premeditated and choreographed. I'm joined right now by Mr. Nagendra Sharma, senior journalist. We also have him in the capacity. Nagendra Sharma was one of the first political advisor of Arvind Kejriwal. Nagendra Sharma, appreciate you taking the time out and joining us this evening. Very quickly, Mr. Sharma, so many political obituaries have been written on Arvind Kejriwal after his loss, after the perceptional loss in his image, because his party was said to be different, built on the tenets of anti-corruption, and then, tarnished by the charge of corruption. It's come full circle for him. How do you read the developments today? Well, PTC, though, political pundits and analysts are free to write political obituaries, and this country has had a very interesting, political journey. But when it comes to Aam Aadmi Party,
this, youngest national political party of the country, its trajectory has been a bit different. The obit has been written many times. If you recollect, that after the 49-day government and after the Lok Sabha elections, when they got only 4 seats and lost security deposits in more than 400 seats across the country in Lok Sabha, that time the first political obit was written. And if you recollect that an 8-9 month period, every day there used to be news reports that 3 to 4 MLAs might be switching over to BJP might be forming a government. But then came the 2015 Delhi Vidhan Sabha elections. And as they say, rest is history. Yes, you're right that last 3-4 years, particularly ever since Vinay Saxena was appointed the Delhi Lieutenant Governor, and the stories about so-called Delhi liquor scam started trickling in, that according to me has been the most difficult period for this party. Then came obviously the arrests of the top leadership, which Arvind Kejriwal referred to in his press conference also, followed by the debacle in the Delhi Vidhan Sabha elections. And now when it was seeming as if, they are entrapped by number of cases, then being in opposition in Delhi, out of media. Yes, at a time when it was looking that this party is at crossroads, certainly today's development is a very big development. Okay. But Mr. Sharma, if you saw the press conference of Arvind Kejriwal, there was a hint of vintage combative Arvind Kejriwal, possibly re-energized with an unexpected shot in the arm, by the Rouse Avenue court today. What do you see ahead for him? Because they have elections to fight. You have a Punjab in 1 year. They're making inroads in Gujarat, or hoping to make inroads in Gujarat as well as Goa. Well, absolutely. See, the journey forward for Aam Aadmi Party, despite today's shot in the arm, is not an easy journey. The first battle that will come is Punjab, because that is the full-fledged state that they control. They have successfully, they'll be completing a 5-year term, hopefully. And see, that is the only state where they are in power. BJP at the moment doesn't appear to be that big a threat in Punjab. The vitriol that you are seeing between Congress and Aam Aadmi Party, even today, amongst the non-BJP parties, Congress is the only party which has taken an adversarial stand even on the court verdict. So Punjab will be, Congress and Aam Aadmi Party will be facing each other, will be taking each other head on. That is the first battle for Arvind Kejriwal and Aam Aadmi Party. Obviously, Goa elections will happen with Punjab. And then obviously where they have been concentrating their energies a lot, that is Gujarat, which comes at the end of 2027. According to me, the first and the biggest challenge which could actually determine the way ahead, or which could actually determine the political fortunes of Aam Aadmi Party, is the Punjab election. All right, we're going to leave it at that, Mr. Sharma. Thank you for joining us this evening. Viewers, we're going to, end the show, but all eyes right now tomorrow, because word has it that you will have the CBI approach the High Court and seek a stay on the order today that was passed. But if you go by what the order was passed today by the Rouse Avenue Court and the verdict, it is stunning. Because somewhere down the line, this was a sitting chief minister who was taken into arrest, his political party completely disintegrating. They lost Delhi and lost bigger than anything else. The tenets on which it was built on, anti-corruption, the image tarnished with the taint of corruption. All of that today coming full circle, where you have the court which says that leave alone, evidence. The case is not even fit to go to trial. The case is discharged.